If you're preparing for SEBI Grade A examination, then I have a good news for you. The news is I'm sharing a smart strategy with you with the help of which you can simultaneously prepare for SEBI Grade A examination as well without putting in double the effort. So in this video, we will discuss the expected timeline for SEBI Grade A as well as PFRDA notification, which is very important. Along with that, I will be sharing some of the insider information I have, especially related to the PFRDA examination. Then I will be sharing the realistic plan which the candidates should follow in order to clear these examinations. Remember that this plan which I'm going to provide you is a complete study plan where I will be discussing day-wise topics which you need to cover. I will discuss what to study, how to prioritize each subject, how many hours to dedicate for a subject, and even I'll help you to understand how to cover the common syllabus efficiently for both the examination simultaneously. So remember that if your goal is basically to secure a career in the India's financial regulatory sector, then this video gives you a clear roadmap so that you can begin your preparation today itself. I call this video as one study plan, two prestigious regulatory bodies exam, double the opportunity. So let's try to utilize the same. Remember that, first of all, if I start my discussion, I would be talking about the expected notification. So right now, after RBI Grade B examination, the biggest notification which we all are talking about is NABARD Grade A. So NABARD Grade A notification will be out in next 30 days as per the past trend. But today I'm not here to discuss more about NABARD. I'm here to discuss about those four exams which have almost entire syllabus in common or same. Obviously you must be wondering कि सर इसमें इंश्योरेंस किसी एग्जाम में पूछा जाता है, किसी एग्जाम में पेंशन पूछा जाता है, किसी एग्जाम में IFSCA एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. I agree to that, but if I say the basic nature, the basic syllabus, the topics, the subjects are almost the same for all these exams, which means you can prepare for all these examinations simultaneously. Now the question is when we can expect the PFRDA Grade A notification. So PFRDA Grade A notification is going to be out very soon. If I share the information which I have, the information which I have got regarding the PFRDA Grade A is that notification will be out soon, and it will be out soon means it will be out in next 20 to 35 days. उन्होंने जो मुझे bracket दिया, that is 20 to 35 days. But surprisingly, one thing which has been added by the individual who gave me the information is they are also trying or they are also thinking of changing the eligibility criteria. हो सकता है कि इस बार PFRDA का eligibility criteria change हो जाए, तो we should be ready for that surprise as well. Secondly, if we talk about SEBI Grade A, so SEBI Grade A notification as per the past trend, we are expecting the notification to be out in the month of November, as early and as last in the month of December. क्योंकि SEBI ने बहुत clearly announce किया था that we will be as per the insider information again that we will be recruiting for next 3 years. तो जो last year का recruitment है उनकी joining 24th of July को, if I'm not wrong, and after that August, September, October are the 3 months which I am expecting them to create the entire process, and in the month of November they will come up with the notification. हालांकि IFSC NPS की notification इस साल 2026 में आने के chances तो हैं, but the point is कब आएंगे उसके बारे में मुझे ज़्यादा information नहीं है. But the point is with the help of a single study plan, with the help of a single preparation, you can target 4 exams simultaneously. But remember that some of these exams they call for postgraduates, PG is required. Some of these exams they come up with specific eligibility criteria or specific qualification in terms of graduation and post-graduation discipline. So before you start your preparation, go and check the previous year notification ताकि आपको पता हो कि क्या आप इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है या नहीं, और अगर एलिजिबल है तो then this study plan is going to help you a lot. But ये वाला जो eligibility criteria, let's see how it's going to change, what all changes are going to be made in the PFRDA examination. But the notification is expected very soon. तो सबसे पहले जो examination आएगा वो आएगा PFRDA. अब अगर मैं
इसी बेसिस पे अगर मैं इन्हीं सारे एक्सपेक्टेशंस पे बात करूं तो इन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग इट कम्स अप कि अगर सेबी का एग्जामिनेशन मान के चलें कि जल्दी से जल्दी नवंबर में अगर नोटिफिकेशन आएगी तो हम मान सकते हैं कि दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा। सो जुलाई टू अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो अगर हम मान के चलें तो हमारे पास मोटे मोटे यहाँ पर जो टाइम बचा दैट इज 5 to 6 months, दैट इज 5 to 6 months। तो अगर हम मान के चलते हैं कि एग्जामिनेशन एज पर द एक्सपेक्टेड डेट्स होगा तो हमारे पास 6 महीने का समय है। एंड आई हैव कम अप विद अ study plan for SEBI that is 6 months timetable, that means 180 days timetable. Along with that, we will be utilizing the same timetable for PFRDA because अगर आप PFRDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस केस में PFRDA का एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन अगर मान लो अगले 1 महीने में भी आ जाती है, 15 अगस्त के आसपास अगर नोटिफिकेशन आई और मान लो कि उसके 45 दिन के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 30 सितंबर या 7 अक्टूबर के बीच में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। चेक कर लेना, जो भी सैटरडे होगा उस दिन इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो दिन बचेंगे दैट इज अराउंड 65 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर हम मान लें कि यहाँ नहीं 65 नहीं, मैं अगर यहाँ पे मोटा मोटा देखूं हमारे पास 75 डेज बेयर मिनिमम है प्रिपेयर, और मैक्सिमम जो हमें दिन मिल सकते हैं वो कितने हैं दैट इज 90 डेज। तो 75 to 90 डेज मिल सकते हैं फॉर PFRDA, 5 से 6 महीने मिल सकते हैं फॉर सेबी एग्जामिनेशन। तो मैं जो आज का स्टडी प्लान आपके लिए लाया हूँ दैट विल हेल्प यू to cover these examination in the given timelines. Obviously, the study plan it won't be same for everybody. हर किसी का अपना तरीका है पढ़ने का, हर किसी का अपना तरीका है चीज़ों को याद करने का, समझने का, और हर किसी की अपनी अपनी प्रिपरेशन भी है। अगर आप RBI Grade B स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपका फाइनेंस मैनेजमेंट ऑलरेडी कवर्ड है, तो उस केस में आपका वहाँ टाइम बचेगा। यू विल बी ऑब्वियसली सेविंग सम टाइम in that particular case, so it will be different and you have to manage or you have to, I would say, tailor this study plan as per your requirement, as per your benefits. तो अगर हम जल्दी से जंप करें स्टडी प्लान पे तो as you can see on your screens, अगर आप देख पाए तो सबसे पहले मंथ 1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, in month 1 on one side I've started with finance and on the other side I've started with companies act, which means we have to cover 2 subjects simultaneously for the upcoming examination. तो अगर मैं CV के point of view से बात करूं then you have to cover the RBI, the first topic that will be done in 6 days, and simultaneously you will be covering companies, basics of Companies Act, chapter 3 of Companies Act, as well as you will start with the chapter 4 of Companies Act, that is share capital and debentures. Uske baad we will be moving ahead and you will be covering the topic that is inflation cover करेंगे, और simultaneously you will be completing the chapter 4 of share capital and debentures. इसके बाद I have given 1 day, that is 9th day for revision when you have done with 2 chapters each in both the subjects. One we have the finance and the other one we have is Companies Act. Then banking system in India जिसकी importance कम है obviously in PFRDA, पर जिसकी importance SEBI में तो है, तो हम उसी नज़र से इसे कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप PFRDA स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप दिन एक भी कर सकते हैं, इनको शॉर्ट करके एक ही दिन में भी कवर करेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप PFRDA के लिए वैसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू हैव टू डू व्हाट, ये जो आपका स्टडी प्लान है इस स्टडी प्लान को यू हैव टू डिवाइड बाय 2। बस स्टडी प्लान को 2 से डिवाइड कर लो, यानी कि यहाँ मैंने 6 दिन दिए RBI के लिए, तो आपको 3 दिन में RBI कंप्लीट करना होगा सो दैट यू कैन कंप्लीट इन द गिवन टाइमलाइंस ऑफ 75 to 90 डेज। उसके बाद वी हैव चैप्टर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसमें 3 दिन का समय मैंने आपको दिया, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, विच इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने 5 दिन का समय आपको दिया। देन वी हैव NBFCs ऑन द अदर साइड विच यू हैव टू कवर ऑन डे 19। तो डे 19 तक ऑलमोस्ट 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फाइनेंस के कंप्लीट हो जाएंगे, एंड बाय डे 18 4 important chapters of Companies Act will be completed. Then we will be moving ahead. The next part is from day 21 to day 25. We will be completing the All India Financial Institutes. इसमें NABARD, SEBI, exam, NHB, they all are in news these days और कहना आसान है, लेकिन अगर आप हर रोज 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर फाइनेंस एंड 3 आवर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर कंपनीज एक्ट, तो 3 घंटे में NABARD कंप्लीट करना भी टफ है, but still we have to run, we don't have any other option.
और अगर आप PFRD के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास टाइम और कम है, then you must increase your number of hours which you are investing every day, because your target is double what I have mentioned on the screen. आपका जो टारगेट है वो मेरे मेंशन किए गए टारगेट से डबल है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। ठीक है जी। अब इसमें अगर हम आगे बढ़े, अगला पॉइंट क्या कहता है सर, on day 25 we will be starting with regulatory bodies and other financial institutions, जिसमें हम RBI, SEBI, स्पेशली SEBI, PFRDA, IRDAI को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। Then we will be revising these two chapters. Moving ahead, chapter 11, appointment and qualification of directors, meetings of board and its powers, we will be doing that, and एक और chapter that is National Company Law Tribunal, Appellate Tribunal. इन तीन chapters को we will be covering in one go, and you can keep the next day for revision, there is no worry. बट अगर हम बात करते हैं फाइनेंस की, तो फाइनेंस की रिवीजन कर लेते हैं दो चैप्टर्स के बाद, एंड देन वी विल स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेवलपमेंट्स इन डिजिटल पेमेंट ऑन डे 29 एज वेल एज डे 30। बट ऑब्वियसली इससे और भी अभी ज्यादा समय की रिक्वायरमेंट है, वी नीड मोर टाइम फॉर द सेम, वी नीड मोर टाइम फॉर द सेम। तो अभी फाइनेंस चलेगा, लेकिन पैरेलल में जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो हमने एक मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट करके पैक कर दिया। नाउ वी विल बी एडिंग कॉस्टिंग इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट, और फाइनेंस अभी पैरेलल में वैसे ही चलेगा। वी विल बी डिस्कसिंग द रोल ऑफ IT in banking and finance. Then I gave you the days for revision. Then we have costing. Material cost is the first point from where we are going to start. Then we'll cover the labor cost. After that you will be doing the overhead costing, and finally the cost sheet, and then you are going to revise all these topics which have been mentioned. दूसरी तरफ डे 5 ऑफ मंथ 2, पहले हम फिनटेक कवर करेंगे, फिनटेक के बाद वी विल बी कवरिंग द एंटायर फाइनेंशियल मार्केट, विल keep one day for revision, and then we go for basics of derivatives. Basics of derivatives के बाद recent developments in the global system, financial inclusion, alternate source of finance, private and social cost benefit, as well as triple P. ये डेज जो मैंने आपके लिए चूज किए फॉर फाइनेंस, दे आर मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा समय प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिएगा। हाँ, अगर कॉस्टिंग इज न्यू फॉर यू, यू मे add a day if you have, otherwise you should increase the number of hours you are investing for the same. So first is overview of cost and management accounting, then we have output or unit costing, and these two topics are very important, तो इसीलिए मैंने जल्दी से एक रिवीजन का डे दे दिया so that you can revise them. Then the next part is job costing as well as contract costing. These are the two things which you need to cover. अब अगर हम आगे बढ़े थर्ड मंथ की ओर, तो जो हमारा थर्ड मंथ है, the third month is the month where we have already completed with the फाइनेंस पार्ट। तो हमारा फाइनेंस पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी कॉस्टिंग चल रहा है। तो हमने फाइनेंस वाले स्लॉट में, जो हमारे दो स्लॉट्स है दिन के, मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो मॉर्निंग स्लॉट में वी हैव फिट इन दी मैनेजमेंट। तो कॉस्टिंग में क्या करेंगे, अब हम कॉस्टिंग में कवर करेंगे process or operations costing. Then we will talk about joint and byproducts costing, service costing or operating costing. Then we will be keeping one day for revision. इधर हमने स्टार्ट किया मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट फंक्शन एंड मैनेजरल रोल्स, एंड देन विल रिवाइज व्हाटएवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है कॉस्टिंग का, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। यहाँ काफी समय लग सकता है, यू हैव टू गिव योर 100%, बिकॉज आई वुड से, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे ये टॉपिक टफ लगता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस फाइनेंस। उसके बाद इन केस ऑफ मैनेजमेंट वी विल बी फर्स्ट कवरिंग मोटिवेशन, देन वी विल बी कवरिंग लीडरशिप, और मोटिवेशन और लीडरशिप से हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो वी विल बी कवरिंग देम इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। कॉस्टिंग की सबसे इंपॉर्टेंट वजह, सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा क्या है, दैट इज बजटिंग। तो हम बजटिंग बात करेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट द लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। यू शुड कवर द लीन सिस्टम एंड इनोवेशन इन मच डिटेल, ताकि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू कवर इट, एंड देन यू गो फॉर रिवीजन अगेन। Parallel में for management we will start the next topic, that is morale and incentives. Then we'll enter the fourth month, और जैसे ही हम fourth month में enter करेंगे, the moment we will be entering the fourth month. In the fourth month हमारा costing complete हो चुका है, third month में तीन महीने में हमारा costing complete हो गया. Now we will be adding on with the accountancy वाला part, लेकिन management अभी parallel में चल रहा है. So we'll start with organizational behavior, then personality, then we'll keep one day for revision. Then we have organizational conflict as well as organizational change. Then again I have given you one day for revision. Then we have organizational development in 2 days, human resource development in 4 days, then communication in next 4 days, and then I have given you
4-5 days where you can easily revise in detail the management part, क्योंकि इसे रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट लर्निंग, और अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो जितना इन्वेस्टमेंट अभी तक किया होगा दैट विल बी ऑल गोइंग वे. कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए ऑब्वियसली स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, then go for accounting concepts, recording of transactions, where I have given you different parts which you can follow for the recording of transaction and numbering. आप सही कर लीजिएगा अपने हिसाब से, but I have given you appropriate time of 5 days where this can be easily done. लेकिन उसके बाद उसका revision, उसकी practice बहुत important है. Then trial balance and rectification errors, bills of exchange, income statement, profit and loss statement भी कहते हैं, that is need to be covered along with 1 day revision. Then we'll move on to the next financial statement, that is balance sheet. You will be covering, after that you will be covering accounting as a financial information, go for revision. Then an introduction to the accounting standards, very important. अच्छे से पढ़िएगा, याद करने वाली काफी सारी चीजें हैं, so try to remember them appropriately. Then we have done with management on one side. तो management के खत्म होते ही we will be adding on the next topic, and the next topic which we are going to add on over here is at place of finance. अब हम क्या ऐड करेंगे, so place of finance पे अब हम ऐड करेंगे इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा उससे काफी अलग है. अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो मैनेजमेंट तो ऑलमोस्ट सेम है, ऑब्वियसली सेम है, बट इकोनॉमिक्स में वी हैव फ्यू चेंजेस. सो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इज सेम विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई, बट इकोनॉमिक्स डिफरेंट, which start with micro concepts, demand and supply, market structure. Then we have national income concept and measurement, classical and Keynesian approach. Then along with this, we have determination of output and employment, consumption function, investment function, multiplier and accelerator effect. Then we have demand and supply of money, very important. We'll talk about the Keynesian theory of money as well. Then we have IS and LM curve, which you have to cover. Then very importantly, business cycle, balance of payment and foreign exchange market. This is all for your economics वाला part. ठीक है. पैरेलल में अगर हम बात करें फॉर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इन दैट केस आफ्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल गो विद इन्वेंटरीज, देन विल कवर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, जहां पे मैंने आपको 4 दिन दिए हैं, फिर आराम से बैठ के एक दिन पूरा रिवाइज करो कि काफी चीजें याद रखने वाली हैं. देन वी हैव फिक्स्ड असेट्स टू बी कवर्ड इन 3 days. Then we have foreign exchange transactions to be covered in 3 days and investments to be covered in next 3 days. After that, we'll start with the third financial statement, that is cash flow statement. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर करो, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स कवर करो, एंड उसके बाद रेशियो एनालिसिस करो. ऑब्वियसली ये चीजें आपने देखी हैं आरबीआई के सिलेबस में, बट यहाँ काफी ज्यादा डेप्थ में देखने को मिलेंगी. वहां आपने सिर्फ देखा है, यहाँ आप डिटेल में कवर करेंगे, विच इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. ठीक है. अब उसके बाद बचा कि सर जितने भी हमारे पेपर 2 के टॉपिक्स थे वो तो हमने पैरेलल में कवर कर लिए. कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी चल रहा है, बट व्हाट अबाउट क्वांट एंड रीजनिंग. तो क्वांट एंड रीजनिंग के लिए भी मैंने आपको एक मंथ का study plan दिया, where you'll start with speed maths, concepts and calculation practice, then number series, then quadratic equation, then percentage, ratio and proportion, average, problem on ages, partnership, mixture relegation, profit loss and discount, SICI, as well as time and work, time, speed, distance, DI, then analogy, classification. Then we have reasoning, alphabet test and alphanumeric series, coding, decoding, input, output, inequalities, blood relation, direction, distance, order and ranking, sitting arrangement, syllogism, as well as we have data sufficiency, logical reasoning and puzzles. एक महीने में आप दोनों चीजें बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने पहले पढ़ा, और अगर नहीं पहले पढ़ा तो बेसिक कवरेज कर सकते हैं. वाई बेसिक कवरेज इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज इट्स क्वालिफाइंग इन नेचर, और क्वालिफाइंग में भी काफी कम परसेंट चाहिए, वो भी पूरे ओवरऑल पेपर 1 में फॉर सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द पेपर 1, which is doable, which is achievable. तो अगर आप बेसिक भी पढ़ लोगे तो उतने से आपका काम हो जाएगा. कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में क्या बचा सर? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस 4 क्लासेस और 4 days. Then bonus shares 2 days, right shares 2 days, that means sitting of 2 days. Then you will go for revision. ESOP आजकल बहुत न्यूज में है, इसका कॉन्सेप्ट पता होना इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Then buyback of securities we have. Then we have to cover in 3 days prevention and presentation of company final account, and lastly we will be covering schedule 3 of Companies Act 2013, where we will be talking about balance sheet and statement of profit and loss. उसके बाद रिवीजन. तो अगर आप ध्यान से देखें तो मोटा मोटा मैंने आपको कहा था 75 days. तो मेरा ये जो प्लान है, अगर मैं बात करूं इसको इन टर्म्स ऑफ 180 days, तो 180 days से पहले खत्म हो रहा है ये प्लान, especially for the core topics, and it can be easily covered in 150 to 160 days. लेकिन अगर
कुछ दिन मैंने बफर दे दिया आपको, अगर कुछ दिन मिस हो जाते हैं और अगर कहीं नोटिफिकेशन पहले आ गई, दिस बफर विल हेल्प यू टू कवर द सिलेबस बिफोर द टाइमलाइन। लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PFRDA, कुछ नहीं करना, सेम स्टडी प्लान आपको फॉलो करना, और ये सेम स्टडी प्लान को बस हाफ से डिवाइड कर लो। जितने चैप्टर्स मैंने रखे हैं उन चैप्टर्स पे जितना टाइम मैंने मेंशन किया है उस टाइम को 1/2 कर देना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी। नाउ लेट्स कम बैक एंड लेट्स कंक्लूड द डिस्कशन। तो अगर हम बात करें कि सर इन एग्जाम्स को कवर करने के लिए हमें जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत सटीक रिक्वायर्ड है। वी शुड हैव द कंसाइज एंड एप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल। इफ यू हैव इट, गो फॉर इट, watch the PDFs, sorry, read the PDFs, try to understand the concept, but accountancy as well as costing में अगर concept PDF से समझ नहीं आ रही, then go and watch the videos as well. But if you are looking forward for one-stop solution for all these exams, then exaMnorM has launched SEBI, PFRDA, as well as IFSCA, as well as NPS Grade A के लिए एक ही बैच बनाया है, जिसमें हम जो कॉमन सिलेबस है वो तो कवर करेंगे और जो अनकॉमन सिलेबस है वो भी कवर करेंगे, सो दैट विद द हेल्प ऑफ सिंगल बैच यू कैन टारगेट ऑल द 4 exams. And the best part is this batch is available at just 4900 for limited period. इसके प्राइसेस बहुत जल्दी हम बढ़ाने वाले हैं, तो लिमिटेड पीरियड के लिए ये अवेलेबल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस बैच के लिंक पे जाइए और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। डेमो वीडियोस आर आल्सो अवेलेबल, गो एंड चेक द डेमो वीडियोस। अगर लगे डेमो वीडियोस में दम है तो जरूर इस बैच में एनरोल कीजिए। उसके साथ साथ इफ यू वांट टू डाउनलोड द स्टडी प्लान, तो आप स्टडी प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे होगा, नीचे मैं फिर से आपको डेमो कोर्स का लिंक दे दूंगा। यू हैव टू क्लिक ऑन द डेमो कोर्स। डेमो कोर्स के लिंक पे क्लिक कीजिए एंड द मोमेंट यू लैंड ऑन द कोर्स यू विल बी एबल टू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर plan, you will be able to download the PDF. याद रखिए PDF के साथ I will be providing you the Excel sheet as well. तो आप उसे Excel sheet को use कीजिएगा and you can utilize the Excel sheet, or I would say you can tailor the Excel sheet as per your requirement, as per your needs. तो जहां आपको लगे, जितने दिन आपको लगने चाहिए, तो आप अपने हिसाब से अपने इस पर्टिकुलर स्टडी प्लान को बना सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। आई होप मजा आया होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स, एंड आई विल बी वॉचिंग और आई विल बी waiting for you on the other side in the paid courses for SEBI, PFRDA, IFSCA and NPS examination. Good luck. God bless you all.